Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today I am going to discuss sexual reproduction in flowering plants, and that are the angiosperms. So let's move to the board. So sexual reproduction in flowering plants और dear students, flowering plants को हम क्या कहते हैं? The angiosperms. So it is very important topic regarding long question in board through board point of view, also short questions and MCQs. So dear student, it is very informative as well. और इसका कॉन्सेप्ट आपने इसी क्लास के अंदर और इसी लेक्चर के अंदर बनाना है जैसे जैसे हम इसको पढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि हायर क्लासेस के अंदर जाकर एट द लेवल ऑफ इंटरमीडिएट आपको अगर ये बेसिक्स क्लियर होंगी तो तब वहाँ पर जाकर आप उसकी मज़ीद एक्सटेंशन को समझ सकेंगे. So it is very important regarding this. So the sexual reproduction in flowering plants or angiosperms. In angiosperms, the main plant body is diploid sporophyte generation. So hopefully dear students, अब आपको इस लफ्ज़ में कोई भी मुश्किल नहीं होगी that what is sporophyte generation. तो dear students, एंजियोस्पर्म्स में जो मेन प्लांट बॉडी होती है, यानी कि जो हमें नज़र आ रहा होता है, जैसे आपने बाहर मुख्तलिफ तरह के दरख्त देखे हैं, तो वो जो मैंने लास्ट लेक्चर में ये बात की थी कि जो हमें मेन जो नज़र चीज़ आ रही है उसे हम स्पोरोफाइट कहते हैं इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, एंड दैट इज़ कॉल्ड अ स्पोरोफाइट जनरेशन. इट इंक्लूड्स स्टेम्स, इट्स रूट्स एंड इट्स लीव्स, उसकी शूट्स, ब्रांचेस, ये सारा कुछ जो है इसका वो कहलाएगा द स्पोरोफाइट, एंड इट प्रोड्यूसेस स्पोर्स. तो इस जनरेशन के अंदर डियर स्टूडेंट्स, इन दिस जनरेशन flowers are the reproductive structures. तो इस जनरेशन के अंदर चूंकि फ्लावरिंग प्लांट्स हैं तो स्पोरोफाइट के ऊपर सबसे पहले फ्लावर्स लगते हैं. जो स्पोरोफाइट के ऊपर जो फ्लावर्स लगते हैं, दे आर द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एंड दे आर गोइंग टू हेल्प इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वो किस तरह से डियर स्टूडेंट्स, चलिए पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं फ्लावर को. व्हाट इज फ्लावर? It is also an important short question. Define flower. So flower, it is a condensed shoot with nodes present very close to each other. So
ये MCQs में भी पूछा जा सकता है कि फ्लावर जो है इट इज़ अ कंडेंस्ड शूट, या इसके अलावा कोई और ऑप्शन स्टेम हो सकती है, कोई रूट्स हो सकती हैं और इसके MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंशाल्लाह उसको हम एक्सरसाइज के अंदर डिस्कस करेंगे. सो इट इज़ अ कंडेंस्ड शूट विद नोड्स, इसके साथ छोटे छोटे नोड्स होते हैं प्रेजेंट वेरी क्लोज टू ईच अदर, एंड all the parts, the different parts of flower are attached at nodes. वो नोड्स के ऊपर अटैच होते हैं जितने फ्लावर के मुख्तलिफ तरह के जो डिफरेंट जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं. सो ना माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और अब डेफिनेशन आ रही है, दैट इज वर्ल. We need to know what is wall. So all the structures of flower present at one node, एक नोड के ऊपर जितने भी स्ट्रक्चर्स मौजूद होंगे, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज वर्ल. क्लियर डियर स्टूडेंट्स? सो ये इसकी डेफिनेशन हो गई. सो डियर स्टूडेंट्स, वर्ल्स जो होते हैं, द फ्लावर्स आर अरेंज्ड in different worlds. डिफरेंट वर्ल्ड्स के अंदर ये अरेंज होते हैं, एंड द वर्ल्ड्स आर ऑफ टू टाइप्स. दो टाइप्स के वर्ल्ड्स हैं हमारे पास. यहां पर हम डियर स्टूडेंट्स नंबर की बात नहीं कर रहे, टाइप्स की बात कर रहे हैं. सो मेक इट क्लियर प्लीज. सो टाइप्स ऑफ वर्ल्ड्स. So two types of worlds are there: outer worlds and the inner worlds. The outer worlds are called non-reproductive worlds. So dear student, वर्ल्ड की तो समझ आ गई ना आपको कि फ्लावर के ऊपर, एक नोड के ऊपर जितने भी स्ट्रक्चर्स मौजूद होंगे उसको हम वर्ल्ड कहेंगे. और जो आउटर वर्ल्ड्स होते हैं, ये दो वर्ल्ड्स हैं. द आउटर टू वर्ल्ड्स आर कॉल्ड एज नॉन रिप्रोडक्टिव worlds because they are not involved in sexual reproduction, and these are, that is, calyx and corolla. So these are the non-reproductive worlds. While the inner worlds are called reproductive worlds because they are actually involved in sexual reproduction. That is androecium and
gynoecium. सो डियर स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है डिफाइन वर्ल, या आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर इट्स टाइप्स. तो डियर स्टूडेंट्स, इसको मिक्स नहीं करना, टाइप्स को नंबर ऑफ वर्ल्ड से मिक्स नहीं करना. क्लियर? तो टोटल 4 वर्ल्ड्स होते हैं, दैट इज द नंबर. आउटर वर्ल्ड्स जो होते हैं वो नॉन रिप्रोडक्टिव होते हैं, जो इनर वर्ल्ड्स होते हैं वो रिप्रोडक्टिव होते हैं. सो आइए इसको अब डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू ड्रॉ flower, and then I'm going to explain the worlds. Dear students, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात बताता चलता हूँ. इनको जो आउटर वर्ल्ड्स होते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन इसेंशियल parts, while the inner worlds, they are also called as essential parts. Essential और नॉन essential का मतलब ये नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है. वी आर टॉकिंग रिगार्डिंग द रिप्रोडक्शन. मीन्स जो आउटर वर्ल्ड्स हैं, calyx and corolla, they are not essential for reproduction, so that is why they are also called as non-essential parts, while the inner worlds, they are essential for reproduction, so that is why they are also called as essential parts, or the inner worlds or reproductive worlds. Clear? So I am going to draw a flower. स्टूडेंट्स, आप भी मेरे साथ साथ इसको ड्रॉ कीजिएगा ताकि आपको भी ड्रॉ करना है. Here we go. So dear students, this is the structure of a normal flower. Now I am going to label it. उसके बाद फिर एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं इसकी. So dear students, this stalk is called pedicel. आपने फ्लावर देखा, फ्लावर के साथ एक छोटी सी वो जो स्टिक्स जो होती है, जो स्टॉक होता है जिसको डंडी कहते हैं, उस डंडी को, जो स्टॉक को कहते हैं पेडिसल. उसके ऊपर जब फ्लावर को हम देखते हैं तो जहाँ से फ्लावर शुरू होता है उसके नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा स्वोलन होता है, थोड़ा सा राउंड होता है और स्वोलन होता है. दिस पार्ट इज कॉल्ड एज थैलेमस. एंड डियर स्टूडेंट्स, this one is the outermost whorl, and it is the first whorl. Clear? नंबरिंग के एतबार से याद रखिएगा, जो आउटर मोस्ट जो वर्ल है, या जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, दिस इज द फर्स्ट वर्ल विच इज कॉल्ड एज कैलेक्स. एंड दिस वन, ये जो आपको ये कलर्ड पिंक कलर की जो पत्तियां नजर आ रही हैं, ये बेसिकली पेटल्स हैं. एंड दिस इज द सेकंड वॉल. दिस इज द सेकंड
whorl. It is called as corolla. Now my dear students, इसके अंदर मौजूद है ये तीसरा वाला. This is the third whorl. It is called as androecium. It is the male reproductive part. And the innermost, this one, this is the innermost whorl, or the fourth whorl, and it is called gynoecium. And actually it is the female reproductive part. So dear students, आपने इसकी तरतीब देख ली. सबसे आउटर मोस्ट जो कैलेक्स, उसके बाद सेकंड जो है कोरोला, थर्ड जो है वो एंड्रोशियम, फोर्थ और जो सबसे इनर मोस्ट है वो है गायनोशियम. क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स इसकी डिस्क्रिप्शन में चलते हैं. So first of all, I am going to discuss the first whorl. Which is the outermost whorl. So dear students, outermost whorl को हमने क्या कहा है? The outermost whorl is called calyx. It is calyx. तो ये आपको ग्रीन कलर की पत्तियां नजर आई, आपने फ्लावर देखा होगा. तो सबसे नीचे बाहर की तरफ एक छोटी छोटी ग्रीन कलर की जो पत्तियां मौजूद होती हैं, जो लीफलेट्स होते हैं, ये बेसिकली बनाते हैं सबसे आउटर मोस्ट वॉल, इसको कैलिक्स कहते हैं. नाउ इसकी हम एक्सप्लेनेशन लिखते हैं. द आउटर मोस्ट वॉल is called calyx, जो आपको यहां पर नजर आ रहा है. ठीक है? एंड इट्स इंडिविजुअल यूनिट्स मीन्स कि जो लीफलेट्स हैं आर कॉल्ड sepals. They are called as sepals. It is usually green in color. Usually, not always, it is usually green in color. And what is its function? Its function is it offers protection to the inner worlds while the flower is at bud stage. जब वो bud stage पे होता है फ्लावर, जिसको हम कहते हैं फ्लोरल बड, जिसको हम उर्दू में कहते हैं कली. तो आपने देखा है जो कली होती है उसके बाहर हरे रंग की पत्तियां आपको ज़्यादा दिखाई देती हैं सराउंड किए हुए. सो बेसिकली दैट आर द
तो दिस इज़ अ फ्लोरल बर्ड, और इसके बाहर वाले साइड पे इसको प्रोटेक्ट किया होता है इन सेपल्स ने। सो दिस इज द फ्लोरल बर्ड, इसको प्रोटेक्ट किया होता है। क्लियर? दिस इज फ्लोरल बर्ड। तो यहाँ पर ये मौजूद है कैलेक्स। और डियर स्टूडेंट्स, आपको इंडिविजुअल यूनिट जिन्हें सेपल्स की समझ आई, उसको भी मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। मैं उसको आपको ऊपर से उसका व्यू दिखाने लगा हूँ, सिर्फ सेपल्स का। तो आप आज जाकर ज़रूर फ्लावर को मज़ीद डिटेल से देखिएगा। तो इस तरह से ये चारों तरफ ऑल अराउंड ये ग्रीन कलर की लीफलेट्स होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, जो बिल्कुल मौजूद हैं यहाँ पर जहाँ से फ्लावर स्टार्ट हो रहा था उसकी बेस के ऊपर। इनको कहा जाता है, दीज इंडिविजुअल यूनिट्स आर कॉल्ड सेपल्स, और एंड दिस होल कंप्लीट वर्ल इज कॉल्ड एज कैलेक्स। क्लियर? So dear students, remember the type of whorls. So there are only two types of whorls, the outer whorls and the inner whorls. The outer whorls are non-reproductive while the inner whorls are reproductive. So hopefully आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे अदर whorls. So तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।